हेलो ऑल। आपका वेलकम और स्वागत आपका मेरे टेक्निकल चैनल पे। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो, जो हम लोग एलर्टन कंट्रोल सिस्टम्स में प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सॉफ्टवेयर एंड है। आपको ग्राफिक्स का एंड एनविजन में कॉम्पास में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द बैक एंड। तो हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस हाउ द सॉफ्टवेयर logic is written so that the operation is successful of the for the control of the equipment, like it could be the AHU, fan coil units, chillers, pumps, whatever you want to control. Based on that, we are going to program our software code. So this software today, what we are discussing is going to be for the air handling unit, and we are now writing the program for the control of the supply fan pressure. So first thing we need to remember, let's get the logic sorted out before we do the designing. What we need is, for the supply fan to run properly and in the required speed, we have the VFD and we have the fan command. So these are the two commands we need to keep in mind, we need to enable. So to enable the command and to have the VFD speed control manage the static pressure accurately, so we need a set point, which is a software point. उसे set point कहते हैं हम लोग. That means कि ये आपका 1.4 inches of water column, 1.4 inches WC के static pressure पे आपको fan की speed को maintain करना है. Because as you know, AHU is an air handling unit which supplies air like 30,000 CFM based on the requirements of the space and the area it is serving, and then that goes into the ductwork. और ductwork के end पे आपको मिल सकता है आपके वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैन कॉइल यूनिट्स जो भी हैं, वो तो सेकेंडरी यूनिट्स जो पर्टिकुलर स्पेसेस पे, पर्टिकुलर ऑफिसेस या एरियाज या रूम्स पे सप्लाई करते हैं एयर को. एंड वो बैलेंसिंग के तहत वी विल फाइंड आउट how much of air CFM is to be maintained in each particular room or area or the space it is serving. तो हम लोग अभी एयर हैंडलिंग यूनिट का सप्लाई फैन के लिए 1.4 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम के स्टैटिक के हिसाब से सप्लाई फैन की स्पीड को मॉडुलेट करके मेंटेन करना है. दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग VFD. द मेन रीजन व्हाई वी यूज VFD, मोस्ट ऑफ द पीपल will not know. The reason we use air handling variable frequency drives is for energy saving. Because अगर आपके पास on off का switch है and the fan is running at 60 Hz all the time, then that means you are continuously running the fan full speed. You're not maintaining the speed for the VAVs as required. तो बैलेंसिंग के लिए और एयर के डिलीवरी के लिए फॉर द रेस्पेक्टिव CFM, ये VFD को हम लोग एडजस्ट करते हैं, लाइक मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड. और VFDs could be from ABB, Danfoss, Mitsubishi. ये डिफरेंट टाइप ऑफ VFDs हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, जो कंट्रोल करते हैं फ़ैन की स्पीड को. तो हमारा प्रोग्रामिंग में व्हाट वी वांट टू मेक श्योर इज आवर इनपुट्स लाइक सप्लाई फैन रिले. Yes, take it here. सप्लाई फैन रिले, देखिए सप्लाई फैन रिले ऑन होना चाहिए. फैन फ्लो प्रूफ, हमको वी हैव टू मेक श्योर कि फ़ैन इज़ रनिंग, वरना कभी कभी फ़ैन बेल्ट टूट जाता है. इफ़ द फैन बेल्ट इज़ ब्रोकन और देयर इज सम इशू विद द VFD or is some alarm which is not making the fan run, then that fan flow is not proven. So we have a fan flow condition here कि fan on होने की condition पे ही we can turn on the VFD. Current supply pressure set point is AV. It's again a set point. मैंने कहा कि 1.4 हो सकता है, 1 inch हो सकता है. As per the design specification and requirements. Supply pressure कितना आता है? This is the actual value. Analog input जैसा आप देख सकते हैं AI है. So this is our module actually. I'll show you. अब this is the proportional integral loop module. KP, KI proportional integral constants होते हैं. और हम लोग usually in BMS programming we go for PI,
We don't go for the proportional integrative derivative loop. Most of the time we go for PI loop only, and that is for our HVAC applications and for our BMS projects. We just go for the PI loop. So PID loop ko we are not gonna consider because derivative is like for fine tuning. I'm just gonna stick with proportional integrative loop module. और AI is input. So ये देखिए KP is proportional constant, एक constant number लिया हम लोगों ने 20 और KI is integral constant. So we have 5. जैसे ही PI loop अगर fan flow condition is met तो हम लोगों ने 5 दिया है इंटीग्रल कांस्टेंट को. सो सीरीज वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी. एंड सेट पॉइंट हम लोगों ने 1.1 1.2 whatever is required 1.4 inches वाटर कॉलम इज सेट पॉइंट. और ये सप्लाई प्रेशर है, ये फीडबैक है. सो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू वी आर गोना गेट फ्रॉम आवर प्रेशर सेंसर. सो ये हमारा प्रेशर सेंसर हमें बताएगा कि फ़ैन की स्पीड को तेज़ करना है. वी हैव टू इंक्रीज द फैन स्पीड और डिक्रीज द फैन speed based on the input it is getting on the feedback. And we have the max and limit. These are again constants 60 and 50 लिया है. ये startup constant 30 लिया है. And we have the limiter. हम लोगों ने एक प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में show you limiter module भी लिया है. We have a minimum and maximum percentage of how much we want the fan to run between. Like आपको 20 से लेके 60 hertz तक रन करना है तो आपको यहाँ पे 20 वैल्यू जो भी दे सकते हैं. एडजस्टेबल वैल्यू है. AV इज एनालॉग वैल्यू, दैट मीन्स इट कैन बी एडजस्टेड. ये वैल्यू आप एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं लिमिटर मॉड्यूल को. अगेन एवरी प्रोग्रामर हैज़ इट्स ओन डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस जो फॉलो करता है. एवरीथिंग वर्क्स एज लॉन्ग एज विच इज़ विद इन द डिज़ाइन गाइडलाइंस है तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. और अभी हमारा इनपुट मिलने के बाद हम लोगों को एक कंडीशन है यहाँ पे स्विच का. हमारा मेन कंडीशन होता है कि फ़ैन रिले ऑन होना चाहिए. ये देखें बाइनरी आउटपुट 0. कमांड अगर फ़ैन का ऑन है तो ही ये VFD के फ़ैन को स्पीड को कंट्रोल करेगा. इफ़ दिस इज़ नॉट ऑन तो ये ऑफ ही रहेगा. तो VFD स्पीड विल बी 0. तो ये देखिए VFD स्पीड विल बी 0. सो लेट मी जस्ट जूम आउट अ बिट. तो ये देखिए, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम फ़ैन स्पीड के लिए. तो हम फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए? जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट द फ़ैन रिले ऑन होना चाहिए. मेक श्योर द फ़ैन कमांड इज़ ऑन, द फ़ैन फ्लो कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, दैट द फ़ैन इज़ रनिंग. वी हैव द फ़ैन फ्लो स्टेटस. एंड करंट सेंसर से कर सकते हैं या डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर से कर सकते हैं. मैनी कंट्रीज इन द गल्फ एंड इन इंग्लैंड वे यूज़ डिफरेंशियल प्रेशर sensors or DPTs, or we have the differential pressure switches to make sure that the fan is running. And in countries like US, we use current sensors also, like के current sensor के input पे पता चलता है कि there is power going to the fan load side, so that means the fan is operational. तो based on these conditions हमारा fan is ready to go. उसके बाद हमारा set point we have to make sure ये software में देना पड़ता है. Adjustable point है, it can be adjusted by the BMS operator or the design people or the BMS engineers of that particular facility. ये pressure, ये supply pressure sensor, ये live value आती है कि how much speed the fan is running. KP, KI proportional integral constants हैं based on which the response of the loop and the time of the loop is ऑपरेशन कि लूप कितनी स्पीड पे आपको फ़ैन का रैम्प अप रैम्प डाउन स्पीड कर सकता है. और ये आपके सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं. लिमिटर मॉड्यूल है कि फ़ैन का मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड पे आप कंट्रोल कर सकते हैं फ़ैन के मैक्स और मिन्स को. और ये स्विच है कि फ़ैन के एनेबल कमांड पे ही हमारा फ़ैन के जो स्पीड होगा वो कंट्रोल होगा. सो बेसिकली ये था हमारा फ़ैन स्पीड का प्रोग्राम आज के लिए. एंड आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया विजियो का ऑपरेशन एंड हाउ द विजियो ऑपरेशन वर्क्स and how we can actually design our own programs. I mean, these are all standard, but if you want to modify and you want to add something, add a couple of delays on make or delay on break modules, you have some more safety conditions. You can add an and or an or
module, basically that will give you an idea if you want to add or delete or modify the program as per the requirements of the site or site specific conditions, what we call, then you can obviously add your modules and then you can integrate them for using this. I'll show you. If you want to integrate something, you just have to go select this module and then you just have to add it, and that will connect it to the module, so that will be inclusive in the program. Okay, let's just delete that, we don't need it right now. Okay, always we have to make sure, okay, see these numbers, you might ask ये numbers क्या है, so these are the sequence numbers actually, so ये sequence numbers हैं. So if you see these sequence numbers are how the program is going to run, like 610 के बाद I can make 611 or 615, so whatever these numbers you put उसके हिसाब से sequence will run. So based on the sequence numbers, the program is going to run and it's going to show us, okay, this is how the program is going to follow the sequence. Okay, so next video I'll go a bit in depth on the Visio program for different parameters, different control points and different equipments you're going to monitor and control using the BMS. Thank you guys. Please like and subscribe, and for the next video I will bring some more knowledgeable topics to discuss. Thank you.